Hello, everyone, and welcome to another episode of Wisdom Waves Wednesday, our weekly series where we dive into the whole new world of parenting, personal growth, success strategies, and mindset transformation. And today's session is about empowering our children with a champion mindset. I am so thrilled to have a special guest with us, Siddhartha Taya, a renowned mindset coach who has helped countless individuals and families build mental resilience and unlock their potential. And this Diwali, as we celebrate the triumph of light over darkness, there is no better time to talk about nurturing a champion mindset in children. Diwali is about new beginning, inner strength, and family values. Those are the qualities of champion mindset, which can bring to life in young minds. By fostering resilience, confidence, self belief, parents can give their children a gift that goes beyond the festival. So, thank you so much, Siddharth, for accepting our invite. And it is so nice to have you here and share your wisdom as well. Thank you so much, ma'am. It's a honor to be with you today and all the audience you have, the wonderful community you have. Thank you so much from bottom of my heart. It's absolutely an honor to be here. Thank you so much, Siddharth, and we are equally excited to learn from your expertise on how parents can nurture this champion mindset in their children. So, if I have your permission, I would ask few questions, and if you don't mind, can you answer those questions for us so that we can understand how to actually unlock that champion mindset? Absolutely, ma'am. Absolutely. Great, great. So, first question, Siddharth, for you is what exactly do you mean by champion mindset and why is it so important for children today? Okay. It's a beautiful question. So now when it comes to champion mindset, it doesn't mean that a child has to become champion, has to excel in everything, but Okay. he has to come first in his class, be a top ranker, get into top institutes of India. No, that's absolutely not the champion mindset. Champion mindset is a mindset that you develop in your child, that when challenges come into his life, he or she is able to deal with those challenges easily. सो Okay. लेट्स से कोई बहुत बड़ी परेशानी आई और उन्हें पता ही नहीं है कैसे डील करना है, दे डोंट नो Hmm. वेयर टू गो, कैसे डील Hmm. करें, एंड दे आर देन गोइंग थ्रू दिस स्ट्रेस डिप्रेशन एंड दैट्स द फेज वेयर दे गेट डिस्कनेक्टेड विद, क्योंकि Hmm. दे थिंक कि तो समझेंगे ही नहीं. So Hmm. now Hmm. here you have to create that kind of mindset and space for your kids where they can come and share with you everything, where after 18, after 21, 23, they know कि अरे ये चैलेंज आया, हम वी आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस रियली टफ, ये चैलेंज तो हम इजीली ओवरकम कर लेंगे, क्या बड़ी Hmm. बात है लाइफ में. Right. नाउ दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज एसेंशियल, ताकि लाइफ में जब भी कोई चैलेंजेस आए, सो दे हैव दिस Hmm. पावर टू से नो कि नहीं, हम ये Right. नहीं करेंगे, वी आर गुड, हमारे पास एक सेफ स्पेस है, हम Hmm. इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली मना करते हैं. सो Hmm. दिस टाइप ऑफ रेजिलियंस व्हेन दे हैव, जब बहुत सब कुछ उनका चला जाए, देन आल्सो दे हैव, हमारे पेरेंट्स ने हमको वो वैल्यूज दिए हैं, वो प्रिंसिपल सिखाए कि हम जीरो से भी वापस स्टार्ट करें, देन वी कैन अचीव एनी सक्सेस वी वांट. दैट्स Absolutely. द Absolutely. ब्यूटीफुल पार्ट Hmm. ऑफ चैंपियन Hmm. माइंडसेट. Wow, wow, wow. That's a different perspective towards champion mindset. We always feel that champion मतलब हमें इसमें अच्छा होना है, but बात वो है ही नहीं. It is all about more resilience, power to deal with the problems, rather than having कि हाँ नहीं मेरे को इसमें बहुत अच्छा करना है. Right, right, absolutely. Absolutely. So, as a mindset coach, what are some of the common challenges you see in parents facing when it is coming to instilling this champion mindset in their children? This is again a wonderful question. And today, what I notice is parents are over caring. वो इतना Hmm. प्रोटेक्टिव है उनके बच्चों को लेके, in everything that they don't
them go out of the comfort zone, Hmm. try new things, Hmm. do Hmm. the things that will actually make them. अगर बच्चा कैकून में ही रहेगा, he won't be able to grow. So Correct. the number one problem I see is एक तो over pampering. Pampering and love Hmm. is a very beautiful way to take care of your child. But over pampering, they will feel suffocated. Soon they will want to run away from you. Right. This is, Hmm. second is they not teach their kids to take responsibility for their own lives. कि बेटा Correct. ये गलत हुआ है, then you are रेक्टिफाई दिस, इसको कैसे आप अच्छे से Hmm. करोगे, कैसे ये Hmm. प्रॉब्लम आया. अभी Hmm. टीचर ने स्कूल में अगर बच्चे को डांट दिया, दे विल गो एंड टीचर. Hmm. दिस इज नॉट द राइट वे. आपका रूट कॉज Right. कहाँ था? अगर बच्चे ने गलती किया तो हाउ दे कैन रेक्टिफाई इट सो दैट दिस नेवर हैपेंस अगेन. Hmm. Hmm. क्योंकि वो लगा तो गलत किया, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे खड़े, सो नेक्स्ट टाइम दे विल डू इट अगेन. दे विल फील हाँ. कि पेरेंट्स है ना, लाइक व्हाई वी हैव टू बॉदर, वी कैन डू एनीथिंग वी Hmm. वांट. गलत सही, Hmm. दे विल मतलब उनके पास वो मैच्योरिटी नहीं होगा कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि सही और गलत कहाँ पे एक हमको एक हाँ. लाइन खींचनी है. बट हियर पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर कि बेटा Hmm. दिस इज रॉन्ग, हियर वी वोंट बी एबल टू स्टैंड विद यू Hmm. एंड दिस इज Hmm. द राइट कोर्स ऑफ एक्शन. यहाँ आप Right. ये चीज करो, इससे आपकी लाइफ Hmm. में इम्पैक्ट क्या होगा, what is the meaning of this thing that we are teaching you, how this will Hmm. help you in your life grow up. Hmm. Hmm. So these Hmm. are the super important lessons that every parent should teach their kids to Hmm. develop this kind of mindset. वाओ, वाओ। सो ये तो मैंने भी देखा है, जैसे हम लोग अपने पेरेंटिंग में ये बोलते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, अपने सिर पे ही खड़ा है बच्चे के, कि वो बच्चे को बढ़ने ही नहीं दे रहा। मतलब ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो हमें नहीं मिला वो हम अपने बच्चे को दें। इन द प्रोसेस हम इतना ज्यादा उनको ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या इतना ज्यादा उनको बांध के रख रहे हैं कि वो चिड़िया उड़ना ही नहीं सीखी। और आप बोल रहे हो अब तो तुम 21 साल के हो जाओ, जाओ उड़ जाओ। तुमने 21 साल तक तो उड़ना दे दिया नहीं है। अब वो बेचारी उड़ेगी कैसे? शी डज नॉट नो हाउ टू फ्लाई। Correct, तो मुझे वो बात correct, बिल्कुल याद आ गई कि absolutely. हाँ, आपने पंख तो दे दिए, बट वो सिखाया ही नहीं कि उड़ते कैसे हैं। तो वो पंख का उसको पता ही नहीं है पंख यूज कैसे करते हैं, उसके लिए तो बेकार है। तो एब्सोल्युटली Yes, आई तो absolutely. हाँ। So, which comes to a third question. So, can you share some daily practices or habits that parents can adopt to support their child's mental resilience and growth? Okay. So here the number one thing that I see is kids take everything for granted. एक बार अगर Hmm. आपने उनको फैसिलिटीज दिया, आपने उनको सब कुछ दिया, Hmm. they will take parents also for granted after a time. So Absolutely. here parents का responsibility ये बनता है, don't give them things, don't give them money, give them skills, give them principles so that they can make money. If they Wow. know how to make money, how to Hmm. get back from if they are broken inside their heart, come running to you for everything. They know कि okay, I know the principles, I know the Hmm. skills, I can Hmm. again develop it. So they won't Right. come running to you for everything. Why Hmm. kids? There are many fights in rich kids also. जब वो बड़े हो Hmm. जाते हैं, they are fighting for the family property. Hmm. 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 A way कि we don't even ask for to our parents कि आपके प्रॉपर्टी का क्या होगा. We say them आप मेहनत से कमाया, आप हम capable है, we are earning, my sister is earning, I am earning. So आप वो Right. सारा पैसा आप वर्ल्ड टूर करो, आप अपनी जो इच्छा हो, चैरिटी करना है, do whatever you want, हमारे लिए मत बचाओ. हाँ. आपने जो करना था कर दिया. After our Hmm. graduation, the day we started earning, we don't Wow. need your money. आप have a beautiful life. So this is Hmm. the kind of Hmm. mindset developed by our parents in us. But Wow. यहाँ क्या होता है, मैं मेरे बच्चे के लिए पैसे बचा रहा हूँ, मैं मेरे हाँ. उसके आगे वाली जनरेशन का क्या होगा. Hmm. See, Hmm. this is not the way. Hmm. Values and Hmm. principles is the number one thing. Second is teach them kindness. So एक क्या हाँ. होता है, बच्चों में ईगो बहुत हो जाता है. Hmm. Hmm. They start feeling that हम बहुत privileged हैं, तुम तो Hmm. they start seeing others as तुम क्या हो, तुम्हारी क्या बिसात है. This Hmm. mindset will harm them in the long run. इसका Right. solution ये है, every week take them Saturday Sunday weekends, take them for volunteering. Tell Hmm. them कि देखो दुनिया में है, हम कितने privileged हैं and we have to give Right. back to the society. अगर हम इस Hmm. स्टेज में है where we can help others, Hmm. we should. So take to Hmm. orphanages, take them to जहाँ underprivileged kids हैं,
जहाँ पे Hmm. स्पेशली एबल्ड किड्स, Hmm. distribute food, spend some time at old age home, so they know कि यार कैसा होता है attachment, how Hmm. parents feel Hmm. lonely at a certain age, so they will not leave you at a Right. certain age, they will not have a mind को जाना ही नहीं है माँ बाप के पास, सारे टाइम टोकते Hmm. रहते हैं सारे Hmm. टाइम, Hmm. they will not feel like restrictions, they will love you a lot if you instill Absolutely. values at the right age. My Hmm. father used to cut articles from newspaper when I was in 8th, 7th, 6th, and he used to give me all those beautiful articles. And there were stories of Swami Vivekananda. There was a story of a Nobel Prize winner for peace, जहाँ पे उन्होंने Hmm. अपना घर आश्रम के रूप में खोल दिया था, get married, invited कि जो भी ऑर्फन्स हैं उनको वो अपने ही घर में बड़ा करते थे. I Wow. grew up with these kind of stories, and then I developed Wow. a heart that I have to serve people. I have to Hmm. inspire lots Hmm. of people. So number Hmm. one thing is this: on weekends, take them for some trek, hike, जहाँ वो nature से connected रहे. So if they are Wow. connected with nature, they will not get too much attached in the materialism. They Hmm. will have prosperity, they will have richness, but they are connected to the roots of the mother nature, how they Hmm. can help the environment. They will not Hmm. destroy it in the run of. So one more thing is getting them attached. जितना Hmm. एडवेंचर करेंगे, जितना ट्रैक करेंगे, हाइक करेंगे, नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, कुछ कांटे चुभेंगे, कुछ कहीं पे गिरेंगे, पैर पे रगड़ आएगी, बट Huh. दे विल बिकम स्ट्रांग. एंड Hmm. आई हैव नोटिस दिस पैटर्न. आप किसी भी बच्चे को यू आस्क देम यू वांट टू डू दिस fun in room or you want to go out for adventure, Oh. 99 out of 100 kids say we want to go for adventure, हमको ये Hmm. रॉक पे चढ़ना है, हमको ये नदी में उतरना है. Hmm. Hmm. So by default our nature is exploring, to go out, take risk. हाँ अगर आप हाँ उनका रिस्क लेना और डिसीजन मेकिंग खत्म कर देंगे कि बेटा हमको पता है तुम्हारे लिए पढ़ाई क्या अच्छी है, बेटा हमको पता है तुम्हारे लिए जीवन साथी कौन हाँ सा अच्छा है, वो हाँ डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी क्रूशियल स्किल जो हमारे इंडियन पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं सिखाते. हाँ नेवर. दे आर लाइक हैबिचुअल ऑफ टेकिंग देयर किड्स डिसीजंस. यहाँ पे बहुत हम्म बड़ा नुकसान आप बच्चों का करते हैं, क्योंकि अगर एट अ हम्म, सर्टेन एज व्हेन दे हैव टू डिसाइड सर्टेन थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, उनको पता ही नहीं है कि क्या करें हम, क्योंकि लाइफ में कभी हाँ कोई डिसीजन खुद लिया ही नहीं है. यही हाँ Train your kids, they are not dependent on you. Make them हम्म so strong they can take their own decisions. So decision making is another thing. बेटा तुमको क्या पढ़ना है, रिसर्च करो, अ, हाँ अपनी क्वालिटीज ढूंढो, एक्सप्लोर हम्म 5 different things. Now you decide आपको क्या करना है. Then they right will have their own brain developed in a way कि हम्म they know कि यार हमको क्या करना है लाइफ में. तो किसी भी हम्म सॉल्यूशन में they will research 2 3 things and then they will correct decide that mom ये वाला चीज मेरे लिए बेटर लग रहा है मुझे. ऐसा नहीं है कि बेटे को फोटोग्राफर बनना है तो आप बोलो बेटा ये तो हॉबी है, अमीर बनने के लिए यू हैव टू बिकम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय. ऐसा नहीं है. हाँ अगर अगर आपने 10 साल अगर कॉर्पोरेट में दिए हैं एंड द सेम 10 years if you give to your photography, you will be equivalently very good absolutely earning हाँ and fulfilled हम्म photographer. हम्म हम्म Maybe wildlife photography, जो आपको आर्ट करना है, पेंट करना है, find हम्म new sources for them, open new sources for them, so that हम्म they can learn new things. और उनका जो हार्ट है, सोल है, वो किस तरफ अलाइंड है, कहाँ हम्म उनको फुलफिलमेंट मिलता है. इफ आई एम हम्म, टीचिंग इन एनजीओ जहाँ मैं बहुत खुश हूँ, भले ही मुझे 20,000 25,000 मिल रहा है, अब हाँ समवन कम्स एंड टेल्स मी कि ये लो 1 करोड़ रुपया, तुम बेटा बिजनेस संभालो, I will say so much, but I don't very happy. I'm so हाँ fulfilled. अब मैं उस हाँ पैसे का करूँ क्या, 1 करोड़ का, when I am just sitting there and thinking कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ के साथ. This is not my करेक्ट true calling. So हम्म हम्म उनका जो कॉलिंग है, let them go. वो फिगर आउट कर लेंगे लाइफ में क्या करना है. You don't have to be there कि तू पैसे कैसे कमाएगा, तेरी जिंदगी कैसे चले. They will figure it out. उनको हम्म बस इतना मैच्योर करो कि यह अगर बेटा ये जो डिसीजन ले रहा है, you should be prepared फाइनेंस भी होता है, हाउ यू विल कनेक्ट विद हम्म, इट एंड हाउ यू विल मैनेज. अगर तुमको लगता है यू विल डू वेल, यू हैव फुल सपोर्ट, गो लिव योर ड्रीम्स, बी हाँ हैप्पी. हाँ एक लाइन से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है कि मेरे पापा मम्मी मेरे साथ हैं. राइट आई विल राइट गिव यू वन ब्यूटीफुल एग्जांपल. आई वाज हम्म नियर द बीच ऑफ गोवा एंड मेरी लाइक ऑल द रिलेटिव्स, अरे पास में मत जाना पानी के, ये हो. एंड देयर माय डैड सेड अच्छे से, जा बेटा खेल, गो स्विम. ये दुनिया मेरे पापा ने बोल दिया, मतलब
मतलब हाँ, बात हाँ, I don't give a damn about the world. See, right. this is the only line every kid wants to hear कि बेटा I am there with you. Don't worry, हाँ, जा तू जा, खुश रहे. They will come back. But अगर आप उसको रोकोगे, they will run away from. The more you right. will constrain, the more you will let them go, come back Hmm. to you with more respect, with more love. These Right. are the lessons I would love to share. Wow, wow. Is this so beautiful, Siddharth? I love the way you started by saying that मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा वर्ल्ड टूर करे या जो भी करे, मतलब मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे इतनी काबिल बनाया है या इतना केपेबल बनाया है that I can do something for myself. And this is such a important value in today's life कि हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं बेटा इसके लिए सेव करो, उसके लिए सेव करो, हम इसलिए सेव कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर बेटर, क्यों बोलना ये सब, मतलब I think it's understood that we are there, but at the same time, it's important for them to realize this is my money and I can do anything about it. And when you are capable enough, you earn. You don't have to rely on my money to be capable. Yes, 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 I mean, this is absolutely. so powerful. मतलब मेरे को बिल्कुल वो दिल जैसे बोलते हैं ना, ये बात बिल्कुल दिल को हिट की है. मतलब I feel this is such a powerful tip as parents, as individuals, as us, as children. Everybody should know this. That if our parents have done so much throughout their life, it's time for them. If we are capable, now we are earning. Now there is no need of our parents to keep sacrificing and keeping for us. स्पेंड करो. कब स्पेंड करोगे? पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चा छोटा है. फिर उसके पहले Yes, इसलिए नहीं किया क्योंकि जस्ट शादी हुई है, भाई सेव करना है. उसके बाद इसलिए नहीं किया बच्चे को कॉलेज जाना है. अरे कब स्पेंड कब करोगे? सेव तो हमने yes, पूरी जिंदगी की है. एंड दिस इज सो मीनिंगफुल. माय आई मीन दिस इज मेनली फॉर पेरेंट्स that you have to inculcate that habit which Siddharth could say so evidently that मैंने अपने मम्मी पापा को proudly बोला वर्ल्ड टूर करो. आई मीन दिस इज नॉट समथिंग, ये छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जितना जल्दी हम रियलाइज करें, क्योंकि अगर हम नहीं सिखाएंगे तो हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे. और आज हमने सिखा दिया तो पूरी जिंदगी हमारे बच्चे के पास ये एक ट्रेजर की तरह रहेगा कि हाँ, मतलब जब मैं बड़ा हो गया या मैंने ये कर लिया तो अब मेरे को अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि मेरे पेरेंट्स जाएं या घूमें या अपनी जो मन है वो करें. yes. Absolutely. Very, very powerful, Siddharth. I just love this one. So, how can parents strike a balance between encouraging their children to be ambitious and avoiding overwhelming pressure? Because obviously, going forward, there's so much of pressure, there's so much of peer pressure, there's so much of, mindset is not just getting developed, and there's so much overwhelm, so much of information, so many things, so many people doing so much. That how can parents create that balance? So, in today's age, this is the most relevant question. So, here there are two factors, बहुत ही Hmm. important. So, if you want your kid to excel like in sports, in anything, then you will Hmm. have to put in the discipline. Let's say आपने जब वो मूवी देखी होगी दंगल, Hmm. पेरेंट्स ट्रेन्ड हिज बोथ द किड्स, ही न्यू कि इनको मेरे को चैंपियंस बनाना है, इनको मेरे को Hmm. टॉप लेवल Hmm. एथलीट बनाना है. He trained his kids like that. But there are many parents who want a chill life. So let's say Brian Tracy hai. Brian Tracy is the top coach in the world. But do you Hmm. ever hear his kids' names? Are they like famous or not? See, it doesn't matter. क्योंकि हाँ. उन्होंने अपने kids को he taught them to be happy with what they are doing. So even if Right. they are in bank, if they are in wherever in their life, he says my Hmm. kids are so happy. We are a very beautiful combined family. Even if they have not excelled, it's completely all right. It's okay. मतलब, Hmm. the ultimate goal is to be happy. What Hmm. is your true calling, and are you happy doing that? So when the Wow. kid explores different things and he understands, yeah, I have to excel this, yeah, I have to go into this. So Hmm. you Hmm. have to build a discipline part जिसमें बहुत सारे sacrifice होंगे. I have done Hmm. many sacrifices during my karate journey when I was going through Wow. till the time I got my black belt. I had to Hmm. miss many family functions. I couldn't be with my wife as much as I want. Hmm. तो Hmm. जहाँ पे आपका एक मिशन बहुत बड़ा है, वहाँ पीछे कुछ कुछ सेक्रीफाइसेस होंगे. यू हैव होंगे. टू हाँ. मेक देम अप फॉर इट. टॉप जो एथलीट्स होते हैं, द नंबर वन कंप्लेंट टॉप बिजनेस पीपल दे हैव कि हमने हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए जितना करना चाहिए हाँ. था. हाँ. हाँ. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज कि जब आपकी लाइफ का एंड होगा, द Hmm. ओनली थिंग दैट यू विल वांट इज नॉट कि मेरी $1 million बिलियन डॉलर कंपनी का क्या हो रहा है. You will not Hmm. ask this.
You will not ask मेरी सारी कारें ठीक है कि नहीं, what is happening. The thing you हाँ, will want is someone, your wife, your kids, your husband, who is holding there your to hand hug you, to by be there with you. your side. That's it. That's the most beautiful. If you have this, you have everything figured out. उसके बाद आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो बनो, but that should be there. That beautiful bond should be there. That ultimately सिर्फ आपके relationships matter करते हैं. Hmm. आपके parents के साथ, आपके siblings, family, your loved Hmm. ones. That's the Hmm. only thing that matters. So Wow. inculcate this thing first. Then अगर उनको champion बनना है तो they can follow the discipline. They can go after it. But Hmm. don't let's say they should not overwork themselves if they are not contented and happy. Right. Michael करना है, he is doing the training himself कि मेरे को Hmm. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोच है, he will grill me तो ready to be grilled क्योंकि मेरे को Right. ये करना है. But हाँ, if that is you are enough. not ready for this, Hmm. Hmm. yes, then yes, then you can choose a simple, beautiful life. Hmm. Everyone is easily be able to earn. बहुत सारे resources है. You can have a beautiful, beautiful life. No Right. grilling, and still you can be very good at what you do. Let's say आपका कोई barber है city में. He is very good at what he does. He is very happy. He doesn't need to be a world champion. He is very good हाँ. at what he does. So teach हाँ. them, be excellent in what you do, and Right. दुनिया में किसी से कभी कंपेयर नहीं कर. द Hmm. मेजर मिस्टेक आई सी पेरेंट्स इज, देख बेटा वो पास वाले अंकल का, अपनी सिबलिंग से देख तेरी बहन तो इतना अच्छा पढ़ती है, तेरा भाई इसी एनवायरनमेंट में इतना अच्छा पढ़ रहा है, तुम्हारे नंबर हाँ. क्यों कम आ रहे हैं. हाँ. सो हाँ. सिट विद योर चाइल्ड एंड आस्क देम कि बेटा अच्छा क्या प्रॉब्लम है. दिस Hmm. वन क्वेश्चन विल चेंज. व्हाई, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, आई एम हियर टू हेल्प यू. Right. दिस वन क्वेश्चन tore their heart out कि पापा मन नहीं लगता, क्लास में बोरिंग हो रहा है, केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं हाँ. समझ में, आई नीड अ बेटर ट्यूशन टीचर, सिट हाँ. विद मी, आई विल मेक इट इजी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरे को नहीं समझ पड़ता है. दे विल हाँ. हाँ. पोर देयर. अब आप बोलोगे बेटा तेरे नंबर कम क्यों आते हैं, टीचर बोलेगा बेटा नंबर तुम्हारे कम है, तुम बेकार बच्चे हो. हाँ. वेयर विल दैट गो विद ऑल हिज फीलिंग्स. कहाँ जाएगा, हाँ. किसको बोलेगा, हाँ. Correct. फ्रेंड्स को क्या शेयर करेगा. Won't be able to share his heart out. Slowly he will become more, concentrating. Hmm. धीरे धीरे ये उस लाइफ में आगे बहुत इम्पैक्ट करेगा. सो हाँ. डोंट बी लाइक दिस. आस्क देम, सिट विद देम, आई एम हाँ. देयर बेटा, व्हाट इज द प्रॉब्लम. अगर नहीं हो पा रहा है, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट. तुम्हारा मन हाँ. किस में लगता है, वी विल फिगर Hmm. अनदर वे आउट. चलो ये Right. कंप्लीट कैसे करना है, इंजीनियरिंग नहीं मन लग रहा है तो भी आई एम देयर विद यू. चलो इसको इजी Hmm. कैसे करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग करना है, बट इसको एक बार कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हारा जो मन है करना. हाँ. Have this sort of mindset, then they will absolutely excel in what they love doing. हाँ. Right. Wow, that's so lovely. Absolutely, that's so true also. मतलब क्या होता है हमारी हम इतना ज्यादा अटक जाते हैं ना चीजों में, लोगों को देख के कंपैरिजन, या फिर हाँ यू राइट सिबलिंग की, हाँ बहन इतना अच्छा कर रही है आप क्यों नहीं कर रहे. मतलब प्रॉबेबली बचपन में शायद हमारे साथ भी बहुत हुआ है. मतलब आई फील माँ अननोइंगली बोल देते थे कि दीदी तो इतना अच्छा कर रही है, मतलब जबकि माय ब्रदर वाज लाइक crazy in his mind. मतलब he was too good, but he was very reckless. मतलब easy Hmm. money, fast money and all those things. तो मम्मी को हमेशा लगता था दीदी से सीख, बट वही चीज उसको Hmm. सबसे ज्यादा बुरी लगती थी, क्या मैं दीदी से सीखूं, शी इज नॉट स्मार्ट लाइक मी. हाँ. So it is like कि क्या मजाक कर रहे हो. So you have Correct. not seen her doing work, you've not seen her doing mathematics the way I do. So मतलब हमारी मेन जर्नी वो हम अननोइंगली हम इतना कुछ कर लेते हैं, which parents should also realize that these habits या फिर I would say these small little things just stay in your mind forever. Because आपने जो बोल दिया Yes. वही हो गया ना, आप भगवान का Hmm. रूप हो, आपने जो बोल दिया वो फाइनल है. So if you've said something, Yes. it will touch me throughout my life. Do what may. So as parents, I think we should also learn how to speak to our children and be very understanding on what words we are using. कि वो उसको Absolutely. इतना दिल पे ना ले ले कि वो कभी खेल, जैसे आपने बिल्कुल अच्छे से बात कही कि व्हेन आई वाज विद माय रिलेटिव्स, ऑल्दो एवरीबॉडी वाज सेइंग डोंट गो, माय फादर सेड गो एंड आई डोंट केयर अबाउट द डैम. दैट्स अ फैक्ट. मतलब पूरी वर्ल्ड चाहे आपके अगेंस्ट हो, आपके मम्मी पापा आपके साथ हो ना, भाड़ में जाए दुनिया. मतलब एब्सोल्युटली हमें फील आती है कि आई डोंट केयर Yes. बॉस, माय पेरेंट्स आर देयर विद मी, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट मी. I don't care about the world, and that's so true for everyone. So, which comes to my next question, which is like, how can you actually, do you think
there are any myths or there are any misconception around what it takes to raise a champion, especially in terms of mindset? So yes, absolutely. There are many myths जहाँ पे पेरेंट्स को लगता है कि he should get into the again वो same problems आती है कि he should हम्म get into the best institutes, नहीं हुआ है तो तुमने क्या किया, then they start हाँ taunting, then they हम्म have this unrealistic pressure. चलो let's say आपका financial स्थिति अच्छा नहीं है and you send your kid कि you need to get into this IIT or the government job तो ही हम्म हमारा सब financially अच्छा होगा. हम्म अब जब वहां बच्चा जाता है and he is not performing up to that mark, he हम्म gets into this lonely zone. क्योंकि वो किससे हम्म शेयर करेगा, पेरेंट्स की तरफ से ही प्रेशर है, तो अब हम्म किससे शेयर करेगा. दैट्स राइट व्हेन वी सी ऑल दी हैपनिंग. चाहे वो हम्म बच्चा आईआईटी में चला गया लेकिन वो वहां पे भी ही इज कमिटिंग सुसाइड, चाहे वो हम्म कोटा में पढ़ने जा रहे आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ करेक्ट ऑल दैट प्रेशर. सो हम्म सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाने से लाइफ बन जाएगी, देयर इज नो गारंटी. There are हम्म people in government jobs super unhappy. There are people हम्म top of the corporate ladder super unhappy, thinking हम्म every day कि ये क्या, like मेरे को तो ये करना ही नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ. They have the money हम्म but they are not fulfilled, they are not happy. Now हम्म बहुत लोगों के पास तो पैसे के पीछे भी भाग रहे हैं but they don't know the principles कि पैसा आएगा कहाँ से. राइट वो hard but it's not हम्म coming. So here have to practice certain things जहाँ आपको बच्चे को विजुअलाइजेशन सिखाना पड़ेगा. आज की डेट में यूट्यूब पे everything is available. So राइट follow top people like Bob Proctor, Brian हम्म Tracy and these things. तो जब मेरा इंस्टाग्राम ओपन होता है there is always Jim Rohn, Bob Proctor, Tony Robbins, वाह Maricia Peer. अब उन्हीं के एक वीडियो मैंने देखा एंड आई एम अगेन मोटिवेटेड. आई नो ओके देयर इज अ आंसर कमिंग विद एवरी सिंगल वीडियो वाह आई वॉच. देयर इज नो nothing like cars ये फलाना ढिमका. I am हम्म learning the principle. So हम्म there are books like Think and Grow Rich. There is book like The Science of Getting Rich. आपको अमीर ही बनना है ना, बच्चों को ये दो चार किताबें 200 रुपए की मिल जाएगी, 300 की, 1000 में आपको पूरे लाखों की यूनिवर्सिटी के पैसे से ज्यादा चीजें सिखा देगी. हाँ Why वाह you are running after the wrong things? करेक्ट If the kid learns these principles, so there is a very famous saying: if someone else has done it, you can definitely do it. हम्म तो हम्म अगर कोई बंदा जिसके पास कुछ नहीं था वो अगर बहुत अमीर बिलियनियर मिलियनियर बन चुका है, then there is a path. And if you हम्म follow that path, अगर आपने उसकी लाइफ स्टडी की, वो प्रिंसिपल्स स्टडी किए कि इनके पास इन्होंने किन 4-5 स्किल्स पे ध्यान दिया. देयर आर पीपल को इंग्लिश नहीं आती थी तो भी आज उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया. देयर आर हम्म पीपल हु स्कूल ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स, दे हैव इंडिया में, नॉट द फॉरेन वंस, they have created a multi-billion dollar or million dollar companies. So राइट गवर्नमेंट सब कुछ नहीं है, आईआईटी आईआईएम्स में जाना सब कुछ नहीं है. पेरेंट्स हम्म शुड नो कि बच्चों को बोल सके बेटा ये सब कुछ नहीं है, इट्स हाँ कंप्लीटली ऑल हाँ राइट, देयर आर मेनी वेज यू कैन बी सुपर सक्सेसफुल इन. तो रीड करेक्ट बुक्स, रीड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, रीड हाँ अबाउट बिजनेस मेकिंग, रीड अबाउट लीडरशिप. नाउ यस लेट्स से अगर आपका बच्चा 10 साल की उम्र से मेडिटेशन कर रहा है, हाउ हम्म मैच्योर ही वुड बिकम, हाउ हिज ब्रेन वुड डेवलप बाय द एज ऑफ 30. हम लोगों राइट ने तो 30 की उम्र में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, हम्म हमको पता नहीं था इसका इम्पोर्टेंट, लाइफ का प्रॉब्लम आया ही नहीं. सो वी वर we are so happy during school college days, at least in school colleges, कि we are like जरूरत क्या है मेडिटेशन का. हाँ 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 but teach these things, teach teach हम्म affirmation मतलब self talk. हम्म so सारे टाइम पेरेंट्स हैव दिस वेरी फेमस थिंग, हम्म तू कुछ नहीं कर सकता, एक काम तेरे से ढंग से नहीं होता, तू हाँ क्या ही करेगा जिंदगी में. ये उनके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो रहा है, आपको हम्म नहीं पता, बट स्लोली एंड स्टडीली उसको लग रहा है कि यार मैं सच में कुछ नहीं कर सकता. जब हाँ उसकी लाइफ में कोई चैलेंज आएगा ना, यू नो ही विल गो बैक टू दैट मोमेंट और वो थिंक करेगा हाँ मम्मी ने भी बोला ही था, क्या ही कर लेगा ये जिंदगी. हाँ तो शायद मैं एंड नहीं कर तब सकता हम्म देयर सेल्फ एस्टीम गोज लाइक दिस, ड्रॉप, गॉन. हाँ हाँ लेकिन आप, सो देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी जहाँ पे एक टीचर ने एक नोट अपने बच्चे को दिया कि घर जाके अपनी मम्मी को देना ये डायरी में. तो वो घर गया, मम्मी ने वो डायरी खोली एंड देयर वाज दिस नोट. एंड बच्चे ने बोला क्या लिखा है. उसकी मम्मी ने बोला ये इस नोट में लिखा है कि आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि हम हम्म, स्कूल वाले इसको पढ़ा भी नहीं पाएंगे, इसका ब्रेन बहुत आगे है. सो आप एक काम करो, आप इसको घर पे ही पढ़ाइए. हाँ एंड
kept that diary and notes her kid. That kid went out to become either Albert Einstein or some of the very famous scientists, Thomas Alva Edison, one of the others. नाउ जब उसने बहुत अपनी मम्मी की उस जो अपना तिजारी बॉक्स होता है उसको जब खोल के उसको डायरी मिली, उसको जब उसने ओपन किया तो यू नो व्हाट नोट वाज। हाँ. उस नोट में लिखा था कि आपका बच्चा एक नंबर का गंवार और गधा है, हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आप घर पे ही रखो, हमारे स्कूल का टाइम मत खराब करो। हाँ, हाँ. अब सोचिए सिर्फ वन सिंगल टू थ्री लाइंस फ्रॉम अ मदर and she Hmm. changed the entire life of her Right. kid just because of this. सेम जब हाँ. आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा नेपोलियन हिल का जो बेटा था उसके कान नहीं थे हाँ, बचपन में, नहीं ही थे. couldn't listen Hmm. and he taught his kid to listen because of the programming. Right. There is another example जहाँ एक मदर का like specially abled kid था, she took the kid with in a secluded place जहाँ कोई नहीं था आसपास उस घर में, Hmm. she and she taught her kid कि तुम कुछ भी कर सकता है। अब यही kid अगर होता ना तो लोग आसपास के रिलेटिव्स Hmm. बोलते अरे अच्छा ओ माय गॉड आपका बच्चा तो डिसेबल्ड है, दिस ये क्या करेगा। वो हाँ, बच्चे के हाँ. दिमाग पे इतनी चीज आ जाती कि वो कुछ नहीं कर पाता। बट शी टुक Hmm. हिम सेपरेटली, अलग से रहने लगी। शी प्रोग्राम्ड हर किड्स चाइल्ड कि तुम कुछ भी कर सकता है, तू बहुत चैंपियन। दैट किड थिंग्स इन हिज और हर लाइफ। Right. That's the power of so again I would say affirmations, self talk अपने बच्चों को सिखाइए कि Hmm. एनीथिंग, Hmm. तू जो चाहे हासिल कर सकता है। आप सोचिए Hmm. एक पेरेंट अगर ये बोल दे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा, Correct. बोलेगा Hmm. यस आई कैन डू दिस। तो सेल्फ टॉक, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, जिसमें आप अपना Hmm. फ्यूचर विजुअलाइज करते हैं जहां आपके पास सब कुछ है, देन योर ब्रेन ऑटोमेटिकली गिव्स यू आइडियाज एंड आपको Hmm. सिर्फ एक चीज करनी है, उसका एक्शन लेना है। Right. सो सिंपल लाइफ इज, क्यों कॉम्प्लेक्स करना है। दैट्स ऑल हाँ. यू नीड टू टीच द राइट प्रिंसिपल्स, डन। Absolutely. I found it so meaningful. So rather than running after degree or what I understood, so the biggest myth is people feel what if you receive a degree or if you receive this, you are done and dusted and you can do anything in life. But honestly, in today's world, even in the NEP policy, yeah, like choose your niche. Even the government is trying to say that in 11th 12th you really don't have to follow the same rat race. You don't have to do the science, commerce and art degree. You choose your niche, what you're good at, be proficient in that and complete doing that, so that whatever you do it with your heart, you do it with your soul, and that's what will make you successful. Because successful really do not have monetary success. It is success from your heart, from your will and everything. So what I understood from the whole conversation of myths and concept misconception is so Siddharth rightly said that आप मतलब you can be from IIT, you can be from IIM, you can go to any other institute and you can be lonely and depressed and miserable. But if you choose your own niche which you're good at, okay, if your inner wish is saying go to IIT, then you must do it. Not because of anybody's pressure, not because of anybody's showing off people or anything. It should come from within, that this is what I want to become, and that is what will make you successful in the world, right? Absolutely, 100%. Such a beautiful way you summarized it. So tell me one thing. So for parents who feel like they have started late in encouraging their children's mindset development, so is it ever too late to make a change? ओके, सो इट इज नेवर टू लेट। अगर आपने कुछ कुछ किया है देन यू हैव टू मेंड इट बैक। राइट अ हार्टफेल्ट लेटर टू योर किड, एक्सेप्ट इट Hmm. कि ये आई रिमेंबर दैट आफ्टर लिसनिंग दिस, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मैंने हमारे बच्चों के साथ किया था या किया है, एंड Hmm. पूरे दिल से बोलो आई एम एब्सोल्युटली सॉरी बट आई एम देयर फॉर यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। इट विल टेक इट्स टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक लेटर गया और एवरीथिंग वुड सॉर्ट इट आउट। Change, हाँ. Magic नहीं है. 30 साल का गैप आप 30 साल 20 साल 15 साल का गैप आप एक दिन में नहीं खत्म कर पाएंगे। Correct. It will take constant efforts from your side, Hmm. Hmm. and Hmm. be there for your kid. Stand with them, Hmm. be there for them। तब उनको दिखेगा कि yes they are making efforts, yes Hmm. he is Hmm. calling। हो सकता है वो शुरू में चिड़चिड़े हों, हो सकता है Hmm. they will feel like, but parents और kids का relation ऐसा होता है कि the heart melts like within a second, मतलब बहुत Hmm. easy
heart melt हो जाता है. One Hmm. moment it will take almost 5, 10, 15, 100 efforts. एक point पे वो melt होगा and it would be they will forget everything, come running to you, hug you and say, forget everything, Everything is let's be good. a together. Yeah, yeah, yeah. Very true. So that's the Wow. simplest thing. Right, speak things with all your heart. Say, um, accept it, जो गलत हुआ, and then be there for them. Hmm. And Just move ahead with as the change. Yes. yes, yes, yes. Hmm. Wow, wow, wow. So it's important to mend relation. मतलब अगर हमने कभी भी शुरू किया है, कोई भी गलती की है, it's important to accept it. Once we accept it, children also know that mama, papa are humans. Obviously, we are not gods, that we cannot go wrong. But if we have realized that's the biggest thing on this earth, so I think children also understand that. Absolutely. Wow, wow. So that ends with our question, but I have prepared a small rapid fire round for you. Maybe you can just choose one word, two word, whatever. And Yes. because we wanted to know you better, we wanted to understand your perspective better, although we are enjoying each and every bit what you're sharing with us. But this rapid fire will also make our audience understand your main perspective of all these things. Absolutely. So This first would be question. fun. Yeah. Okay, so first question is, what is the first thing you do in the early morning? Meditation. Okay. One book that changed your mindset. So think and grow rich. Okay, that's my favorite also. Favorite childhood memory. So favorite childhood memory when my dad used to carry me on his shoulders when I was very small, and he used to take me for a round in garden or somewhere. That's the moment I always itched in my brain. Wow, that's so sweet. One habit that you think everyone should develop. Never giving up. Never ever give up. No matter how hard life gets. कुछ भी हो जाए, every, but even if you are 30, even if you are 40, you can start over and get everything that you want. There is Wow. never like age निकल गई. Remove Hmm. these things from your mind. My age is not right, हो गया, I am old. Never. Start again. और नहीं हो तो talk to me. I will bring that How young one inside you. sweet. Okay, so tea or coffee? I am a tea, like I am a Nimbu Pani person, but with my wife, she is a tea lover, so I sometimes have tea with her. Wow, lovely. So one word to describe a champion. Okay, resilient. They can bounce back from anything, anything. They will not feel deep. They can bounce back. Okay. So, favorite way to unwind your busy day? Okay, so listen to music or go out for a lonely walk. No one, just you with your thoughts. You should spend some time, 10, 15 minutes. Most beautiful person in this world, that's you. I love the way you put it across. Your go to motivational quote. Okay, so nothing is impossible. Okay. If you could coach anyone, past or present, who would it be? If I would love to coach, so I would love to coach the top celebrities and the sports person in this world. If they feel lonely, whenever I listen this news that they committed suicide or something, I feel भाई Hmm. मेरे से बात कर लिया होता एक बार. Huh. How I would bring back thoughtful. the life to you. Absolutely, absolutely. I love that. One thing you believe every parent should say to their child daily. I love you. I love you, and I'm always there for you. Oh, how sweet. That finishes our rapid fire round. Thank you so much, Siddharth. Yeah, I had so much of fun doing that. So we had a lovely and enlightening conversation. I hope you all took lot of notes and lot of value from this discussion which we had, and a big thank you to Siddharth for sharing such incredible insights. I loved your examples, your strategies, your the way you explained so effortlessly to become a champion and have a champion mindset in children. I think all of us now it would feel that's very easy to have a championship mindset or become a champion itself.
So if you all enjoyed today's session, don't forget to join us in the next week on the Wisdom Waves Wednesday as we continue to explore in the life changing topics. And if you are looking for some mindset coaching, please make sure that you get in touch with Siddharth. I'm going to tag him on my all the three platforms: Instagram, YouTube, as well as on LinkedIn. So make sure you connect with him. He does a lot of one-to-one sessions. He has a lot of master classes going on. So if you are looking for somebody who can coach your mind, if you're looking for your child, for yourself, please get in touch with him. As you have seen, he's so awesome with whatever he does and whatever he says. So thank you so much for everybody for being in here. The path to greatness with the right mindset. And thank you so very much, Siddharth. We had a lovely session. You were awesome, and every bit of wisdom which you shared, I am going to put it in my life with my children. And thank you for joining us today. Most welcome. Thank you so much. It was a beautiful, beautiful session. Loved it. Thank you so much. Thank you, and wish you everybody a very happy Diwali. Have loads and loads of happiness and enjoy with your friends, family, and make great connection together. And happy Diwali again. Happy Diwali.